Okay, very good morning to all. In the last lecture, we have seen the unit number. We have completed the unit number 5. Uh, we have covered the topics like the steps of query processing, then query optimization, measurement of the cost, and all these things. In this lecture, we are going to start the unit number 6, last unit of this subject. Just 1 minute, let me save the GPT. Is it visible? Yes, sir. Yes. So last unit, that is storage strategies. In the in this unit, we will see as per our GPU syllabus, we have three topics: indices, async, and the V tree. As you know, these three topics are covered in the data structure and deeply. So we will go through this all topics in the DBMS also. So let's start with the storage strategies. It covers three topics: indexing, hashing, and B tree. There are different types of trees are available, but in our syllabus it's only B tree. So as you know, the tree, I think in the data structure it is already started. So let's see the indexing. Let's start with the indexing first of all. Can anyone have any idea about indexing? What do you mean when the indexing, or why it is required? Can anyone? Yes, sir. Yes, Sandeep. Sir, there are too many web pages available on the internet. So indexing helps to make a clear record of what data is concerned to what web page, and it generates a map so we can access them through easiest with pathway. Okay, easiest and faster way. Good. And any other students? Anything else? What do you mean by index? Why we require this index? Unmute your mic. हेलो सर। Yes, Abhishek. सर इंडेक्स मतलब जस्ट लाइक एक टेबल होता है Yeah. जिसमें सर रो एंड कॉलम होता है ठीक। इंडेक्सिंग जैसे प्राइमरी हो गया सेकेंडरी इंडेक्सिंग लाइक दैट। Okay. Okay. सर इंडेक्स में सर डेटा स्टोर करता है, एड्रेस डेटा के एड्रेस स्टोर करता है। Okay. Good. Anything else? Have you learned this topic in data structure? यस सर। Oh, then it's easy for me. Now it's time to learn this concept by you guys. So everyone needs to give me the answer. Okay, whatever answers I got, that is correct and perfect. So can anyone give me the real life example of indexing where we can use in a routine life? Where we are using the indexing in a routine life? Index In documentation, sir. in documentation. Okay. सर बोल सकते हैं रिटर्न वर्क। What? सर वर्क 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 सर में जो डेली कैसे? सर डेली जैसे हम लोग को जो क्या होता है पढ़ना रीडिंग। Okay. For class timing, maybe best suitable example for this index is
book index or book pages. We can say that book. In each and every book we have an index. So according to that index, we are directly go to the particular topic. That is the best example for the this concept. Okay, can anyone tell me types of index? Yes, sir. Yes, Abhishek. Sir, primary and secondary. Wow, good. Any other students? Right now we are having a 40 students. So out of 40 students, only 2 to 3 students are giving the correct answer. What about rest? Okay, I will ask randomly to all. Okay, Manish Kumar, tell me. Manish Kumar, tell me the types of index. 138. Manish Kumar, 130. I think he is not present. Okay, Jai Shankar, Yes, sir. uh, types of index. Primary और secondary index. प्राइमरी में क्या होता है? तो उसमें ऑर्डर होता है सर, ऑर्डर वाइज किसी भी चीज को किए ओके, जाते हैं। एक फिक्स लेंथ का होता है, ठीक है, वो ऑर्डर वाइज होता है। मान लीजिए जैसे एरे में डिफाइन करते हैं, एरे इंट एरे टाइप मतलब 5, तो उसका 5 साइज रहता है, उसमें 5 एलिमेंट को हम ऑर्डर वाइज सीक्वेंस वाइज उसको अरेंज कर सकते हैं। ओके, गुड. Okay, next, my next question. Uh, is there any types in a primary index? What are Yes, sir. what are the types? Sir, cluster or Dense index, non-cluster? sparse index. Arman, wait. Nidhi is speaking first time, Sir, so let's start. cluster and non-cluster, I think. What? Cluster and Non-cluster. non-cluster. Okay. Arman, now you tell me types of primary index. Everyone should take a part in Yes, this sir. group Primary index discussion. का दो टाइप्स होता है, dense index और sparse index. Okay, good, very good. Anything else? Yes, Abhishek? Yes, yes, Abhishek. sir. Yes, Abhishek. Sir, primary indexing divided into two parts more, sparse and dense indexing. Sparse index and dense index. Yes, sir. Primary Sparse and index, dense. yes, sparse and dense. Okay, then congratulations to all. You will get the 7 marks without teaching this topic, because in a last paper, if you observe, there was one question that is explain dense and sparse index with example in a 7 marks. So that you know, good, very good. And now let's discuss in a detail what do you mean by the sparse index. Can anyone? Yes, sir. Yes, tell me. Uh, a sparse index helps to resolve the issue of dense index. What? Your A voice sparse is index breaking. helps to Help to yes, sir. Help to help to resolve the issue of dense index. dense index. Okay, then let Resolve. me Yes, sir. then first let me ask the what is the purpose of dense index? Dense index क्या है? Sir, Sir, dense index is a record of
every search key. Okay, yes, Nidhi. सर स्पेस रिड्यूस करने में Okay, yes, Jai Shankar. सर ये डेटा को मतलब फास्टर सर्च कर लेता है, स्पेस ये ज्यादा लेता है मोड में। Okay, good. And what about multi-level index? Do you know multi-level index? Yes, sir. Yes, Saurabh, tell me. Yes, sir. Multi-level index record compare search key value and data pointer. Okay, it's like a Yes. outer index, inner index, and then our database like that. Or outer Okay. index, inner index, data blocks. Okay, okay. At multiple level, that is known as the simply name suggests Yes. its meaning multi-level index. Okay, good. Yes. Now, can you tell me about the secondary index? Yes, sir. Secondary index? Yes, sir. Yes, sir, man. Secondary index. Secondary index is generate of unique value for each record. Each record. Anyone else? Anyone else? ये सर मैपिंग फर्स्ट लेवल का Yes. होता है ना? Yes, Jai Shankar. सर Yes, yes, you are audible. सर जो ट्रू लेवल देता Arshit, what's your problem? Arshit, tell me what's your problem? It is already taught by the Vidhi madam in a data structure that you should know. Don't teach me whether I taught you or didn't taught you, but you already aware with this topic in a data structure. आपको नहीं पता है वो आपका प्रॉब्लम है क्योंकि आपने अटेंड नहीं किया है. Then you should see the watch the recorded video for that. आप ऐसा तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सर रिवीजन करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ. तो इसमें से कैसे रिवीजन होगा? 5 स्टूडेंट्स देते हैं, अरमान, सौरभ, जयशंकर, निधि एंड कौन था एक अभिषेक. ये ऑलरेडी हो चुका है डेटा स्ट्रक्चर में. इट्स नॉट अबाउट कि एक टॉपिक 4 सब्जेक्ट में है तो 4 बार रिपीट करवाओ. इट इज नॉट नेसेसरी लाइक दिस. This is very bad manners, Arshit. You don't know the even guts how to talk with the faculties also. With whom you are talking that you don't know. Sir, This is not a proper way, Arshit. I'm not expecting at least this from you. sir, am I audible? Yes, Arshit, you are audible. Yes, Arshit, you are audible. सर पढ़ाई हुआ है क्या? क्या? सर मैं बोल रहा हूँ कि सर पढ़ाई हुई है. सर ये नहीं पढ़ाई हुआ है हम लोगों सर, को. हैशिंग और इंडेक्सिंग जो अभी सर ये सब्जेक्ट में चल रहा है, ये कोई और सब्जेक्ट? अरे भाई मैंने पहले ही बोला तो. और सर जहाँ तक बात है स्पार्स की, तो स्पार्स मैट्रिक्स पढ़ाई हुआ है सर हम तो लोग अभी नहीं. अर्षित, मेरा क्वेश्चन तो ये है कि नाउ यू आर सेइंग दैट कि वी डिडंट लर्न दिस थिंग. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन जब था
हैव यू लर्न दिस टॉपिक इन अ डेटा स्ट्रक्चर, तब क्यों हाँ बोला, मेरा क्वेश्चन वो है। अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अब होगी कि जब मैंने बोला तब। हेलो सर। वेट 1 मिनट अभी से, जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा हैव यू लर्न दिस सब्जेक्ट दिस टॉपिक इन अ डेटा स्ट्रक्चर, तब जिसने भी हाँ बोला, चलो उसने सर पढ़ा होगा, तो उस आपने समय नहीं तो पढ़ा मैं है तो क्लास उस टाइम आपने क्यों नहीं बोला? में नहीं था सर। तो वो तो टाइम पे ज्वाइन हो ना। तो आप ऐसा करोगे कि सर मैं 10:30 पे ज्वाइन होके बोला, एमने आप ऐसा बोलेंगे 10:30 पे ज्वाइन होके बोलेंगे कि सर मैं क्लास में ज्वाइन नहीं था, ये सब पूरा रिपीट करवाओ, ऐसा थोड़ी ना चलता है। यू शुड बी प्रेजेंट ऑन शार्प टाइम and I am giving you 5 minutes to join. सर मेरे तो Don't give any excuse. This is a very bad thing, yaar. Yes, Abhishek. सर मैं यही कहना चाहता था हर्षित को कि सर पढ़ाई तो हुआ है, इंजेक्शन क्या होता है अभी तो हम डीबीएमएस में ही हम लोग पढ़े हैं। इंजेक्शन DBMS, सर जैसे D, रो एंड कॉलम, कंटिन्यू रो एंड कॉलम होता है सर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो जेन्युइन सर जनरल एग्जांपल हो गया सर, 2 टाइप्स। और रहा general, बात स्पार्सन और डेंस का, तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा है। that I was asked. कि व्हाट डू यस यू सर। मीन बाय इंडेक्स? इंडेक्स तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वो तो प्राइमरी वाले स्टूडेंट्स को भी पूछ लेना, तो उसको भी पता है इंडेक्स क्या है, ठीक है। दूसरी दूसरी बात रही कि मैंने ये आपका टेस्ट जनरल नॉलेज टेस्ट किया कि इंडेक्स के टाइप कितने, तो वो भी कुछ स्टूडेंट्स को आ गया, ठीक है। फिर मैंने पूछा कि हैव यू लर्न दिस टॉपिक इन द डेटा स्ट्रक्चर, तो आपने बोला यस, तो मैं उसमें टाइप्स मैंने पूछा तो वो भी आ गया। नाउ आई एम क्लियरिंग वन थिंग, tell me the correct answer. Have you learned index in a data structure? आधे स्टूडेंट्स यस बोल रहे हैं, आधे स्टूडेंट नो बोल रहे हैं, आधे को आ रहा है, इसका क्या मतलब है पता ही नहीं। ओके, someone सर सर someone सर someone has pasted the only binary tree. Yes, let me ask, binary tree is completed in a data structure or it's remaining or it's The going on? complete sir. सर गोइंग सर ऑन गोइंग सर। ऑन, नहीं सर, ऑलमोस्टली कंप्लीटेड। सर बाइनरी ट्री कंप्लीट हो गया है। अभी कौन सा टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर में चल रहा है वो आपको हाँ पता है? आप सेशन अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस। सर एवीएल ट्री चल रहा है यस सर, ट्री में टाइप्स चल रहा है, जैसे बाइनरी ट्री, एवीएल एवीएल ट्री ट्री। चल रहा है सर, बाइनरी ट्री खत्म हो गया। ओके, आपको इतना पता है कि ट्री के अंदर बहुत सारे ट्री है, एवीएल ट्री है, बाइनरी ट्री है, बी प्लस ट्री, और वो सो मेनी ट्रीज आर देयर, ठीक है। नाउ आई एम आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चन टू यू, गिव मी योर perfect answer for this question. Have you learned B tree or not? Yes or no? नो सर। नो सर। यस बोलो। सर अब बी अब थ्री मैं इज क्या कमिंग द नेक्स्ट क्या लेक्चर। क्या रविंद्र, तूने कहाँ से पढ़ा? कौन से डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर में? सर बाइनरी बी ट्री में सर बाइनरी ट्री होता है ना, तो वो तो पढ़ाई हो गया है। लेक्चर देख लीजिए आप, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है, हम लिंक भेज देते हैं आपको। अब तो मुझे आपके क्लास से विश्वास उठ गया है। अभी तक मैं आपके क्लास के इंप्रेशन मेरे माइंड में अच्छी थी कि इतने इतने स्टूडेंट्स तो अच्छे हैं कि वो एटलीस्ट उसको पता होता है कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, कौन सा टॉपिक नहीं चल रहा है। नाउ यू आर कंफ्लिक्टिंग ईच एंड एवरीथिंग। दो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं यस, दो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं नो। चलो हेसिंग तो नहीं हुआ है, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि वो भी हो गया है हेसिंग। नहीं हुआ है सर, अभी वो रिमेनिंग है सर। नो सर, हैसिंग ओके, नहीं हुआ है। हाँ हेसिंग वो ठीक है। नहीं, ये नहीं हुआ है सर। This is very, let's start from the first. No issue. मैं सिर्फ आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा था, मैंने ये चैप्टर कंप्लीट नहीं करवाया है हर्षित। इट्स माय ड्यूटी टू स्टार्ट दैट थिंग।
हाँ, मैंने ये बोला कि डिटेल में आपका डेटा स्ट्रक्चर में आएगा या फिर हो गया होगा, ठीक है। Okay, as you know, indexing, hashing, and B-tree. Let's start with the indexing. Indexing based example. It's a very common sense question. What do you mean by index, and what is the real life example of indexing? Is the provided index is provided in each and every book. That is the best example of index. And why we require this index? So index is provided to search any data from the database in an easy way or in a faster way. So indexes are the lookup tables that the database search engine can use the speed up retrieval of the data. Speed up retrieval of the data, it means if we have a large amount of data, we are not talking about only 5 rows or 10 rows on less data. We are talking about if we have a large number of data, then we can use the indexing. जैसे आप पहली बार डीबीएमएस की बुक हेनरी फोर्थ ओपन कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे है. देन इफ आई से डेडलॉक, देन यू विल सर्च इन इंडेक्स डेडलॉक कौन से पेज पे, देन यू विल डायरेक्टली go to that page. That is the use of index. So index, the database index is the data structure that improves the speed of the data retrieval operation on any database relation or any table. So whenever we want to retrieve out of all large number of data records, at that time this index will help us to find the particular desired data in a fast manner. So as already we have discussed, an index in a database is similar to an index in provided in any book. Okay, one more thing I would like to inform you, whether you are agree or not, that is a different thing. But according to my experience and according to my knowledge, before starting to any topic, if you are able to give the answer regarding that topic, whether that topic is taught by any faculty or in any subject in a previous semester or maybe in anywhere, it doesn't matter. आपको ये टॉपिक पढ़ाया है कि आपने सुना है कि नहीं सुना, it doesn't matter. If you are able to give the answer of any question before starting that topic, then we can say that your logic, your sense of humor, your concept, fundamental concept are clear. हम ऐसा predict कर सकते हैं. That is according to my knowledge and experience, and it will be beneficial to you, not me or not anyone. It is beneficial to you कि आपको वो टॉपिक समझने में इतना इजी लगेगा. जैसे अभी मैं yes, Judith, you said the perfect sentence. That's because we get a better understanding at the time of lecture. That is the purpose of brainstorming. What we have did, that is known as the brainstorming activity, teaching methodology. This is one, it's teaching methodology in a lecture or lab. He asked the question based on a previous fundamental or based on a topics. अगर आप को याद है, each and every time I am saying that most of time name suggests its meaning. तो आपको समझना चाहिए कोई भी टॉपिक में. I am not talking about this regarding this issue and regarding this subject and regarding this indexing or anything. I am talking in a general way. If you are able to give the answer for particular question which is asked by any faculty, and if you understand that word or question, then it will be easy to understand that topics. जैसे मैं उसको हम बेस बोलते हैं, बेस, फंडामेंटल बेस बिल्ड करना. जैसे हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो पहले बेस
करते बिल्ड करते हैं। सिमिलर वे मुझे अगर आपको कोई टॉपिक बढ़ाना है, उससे पहले मैं आपको इधर उधर की बातें, इट मीन्स इधर उधर के टॉपिक्स रिलेटेड जो थियरी उसके रिलेटेड टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर पूछूं, उससे मुझे पता चल जाता है कि आपको कितना ग्राफ्स कर पाएंगे, कितना अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कौन कितना अंडरस्टैंड कर पाएगा। एंड इट इज नॉट अ मेजरमेंट इवैल्यूएशन, दैट इज नॉट अ इवैल्यूएशन, बट मुझे इतना पता चल जाएगा कि आई कैन अंडरस्टैंड कि दिस स्टूडेंट्स विल गेट दिस थियरी एंड दिस स्टूडेंट्स विल नॉट गेट थियरी एट सम लेवल, नॉट परफेक्टली। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे सर आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा माइक तो म्यूट है, हम ऐसे ही बैठे, आपको कैसे पता हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा उसका मतलब ये थोड़ी ना मुझे समझ में नहीं आया, मुझे भी समझ में आ गया थियरी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वी आर टॉकिंग इन जनरल वे, डोंट टेक इट पर्सनली। जैसे हम छोटे बच्चे को कड़वी दवाई पिलाते हैं तो कैसे पिलाते हैं, पहले गुड़ खिलाते हैं फिर दवाई पिलाते हैं, या फिर कोई आइसक्रीम ट्रॉफी वगैरह दे लालच दे के फिर खिलाते हैं। सिमिलर वे कोई भी टॉपिक उसको हम पहले कोई रियल लाइफ एग्जांपल या फिर कुछ बेस क्लियर कर ले तो वो टॉपिक समझने में इजी रहता है, उसमें कुछ ज्यादा रहता नहीं है। ठीक है, तो दैट इज माय एडवाइस कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप रीड करके आओ वगैरह ये सब, ठीक है आप करके आओ तो अच्छी बात है, और मुझे सब कुछ पता है हर्षित, जो तू बोल रहा है ना किसी फैकल्टी ने अपलोड किया है क्योंकि दूसरे क्लास में अपलोड हो गया है, वैसे तो मुझे ये भी पता है कि आप कितना क्वेरीज में ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहे हो, जैसे भी मैं क्वेश्चन पूछूं सीधा गूगल कर ले, वो भी पता है। दैट इज नॉट अ इवैल्यूएशन और मेजरमेंट। Online classes I cannot differentiate that thing. When I ask the particular question to particular students in terms of viva, at that time it will represent each and everything, तब सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे और लैब और लेक्चर में कैसे झूठ बोल के या फिर इधर उधर का सर्च करके देख के बताता था। So don't worry, I will not do the partiality. I will be fair and that's my nature. ऐसा नहीं कि लैब और लेक्चर में परफॉर्मेंस झूठ बोल के या मक्खन लगा के चला दिया तो सर इम्प्रेस हो जाएंगे, दैट इज नॉट इन माय नेचर। So indexing can be used with the only select operation in this particular. So we can create the index by create index name on table, then column names. This is the basic syntax. One example is given: create index account on account table, account number, comma name, comma city. So this is the way of optimizing the performance of a database by minimizing the number of disk access required when a query is executed. So simply answer of this conclusion of this point is, whenever we want to retrieve the data out of large database, at that time we need that data in a speedy manner, we need that data in a fast manner. At that time index will help us and it will improve the performance of query optimization. So it is the one data structure technique which is used to quickly find and access the data in the database. That is the fundamental for indexing. So indexes are created using two database columns. First based on search key and second one is based on a pointer. So search key generally it will be our primary key column on that table, which is stored in a sorted form. If it is in sorted form, then it will be the faster. So हमें झट से पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे right now I am getting your names in this Google Meet in a alphabetical sorted form. So if I want to search the name of like Raj, then simply I will go to the R and I will find is there any Raj or Raj is present or not. So simply it will give the faster access like this. If it is sorted, then it will help us to search that key, that data easy way.
And pointer contains the address of that disk where the values can be found for a given request. Pointer contains the address. So as some of you know, the types of index, generally it is divided into a primary index, secondary index, and clustering index. In a primary index, it is divided into a dense index and sparse index. Okay, one more thing I want to clarify that thing. This chapter is introduced in the last year, so you will not find this type of question in last two previous years papers. So in a last year paper, it is asked. It was asked that dense index and sparse index difference, and one binary B tree example. Construct a B tree. That's it. उसके पहले के जो जीटीयू के पेपर से उसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा. सो ऐसा नहीं सोचना कि पहले के पेपर में नहीं है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले वो सिलेबस में नहीं था. जीटीयू अपग्रेडेड दैट सिलेबस एंड नाउ we will have this thing. So in a primary we have a dense and sparse. Let's see this thing. Primary key, primary index, it means if that index is created based on that primary key, then it is known as the primary index, as you know the primary key. So it will be easy to understand this thing. And as I said, primary keys are stored in sorted form, then performance of the data access will be the faster. It's very common sense and very basic thing. If it is sorted in a, if it is stored in a sorted form, then we will get the database, the data in a faster way. जैसे मैंने अभी एग्जांपल लाइव एग्जांपल दिया आपको. If I want to search the name whether the Amod is present or not, so simply I will search the A. If I want to find the, say the Udit is present or not, then I will go up to the U, and then I will check that Udit is there or not, right? Let's see dense index. So in the dense index record for every search key value in the database are present. So suppose this is our main table, roll number and name. So if in an index table we will get the index for each and every search key. It means 001 for the 001 roll number, 002 for 002. It means every roll number have a index in an index table, then it is known as the dense index. So this makes searching faster. Number of records in the index table and main table are the same based on this index table, because normal search से तो वो faster ही है. Now compared to the sparse index is faster than the dense index. So again it is depends on situation, depends on requirement. आप कौन सा इंडेक्स यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है. सो इन अ डेंस इंडेक्स every search key is having a index record, that is the dense index. And sparse index, in an index record for each every search key value in the database is not created but in some block structure, like 001 is stored in an index table for this roll number, 003 for this, so we, and 007 for this. It means we have a 3 index. If we search about the 4, then first we will have to look up the index table. If 4 is greater than 3, then we can find the next index 7. 4 is less than 7, so then we can go into the third, and we will go to the main table and we can search the 4 as a Satish. So this index remains for few items, not for every search key. So but obvious, it will reduce the index table and store the less memory. So we find the index value that is less than or equal to the value to be searched,
Then we apply the linear search. Linear search you already learn in a data structure. Linear search to get the actual data from the database. So by using this technique, you can find the data from the large amount of database. Clear? Is there any query in a data sparse and dense? It's a very simple concept, not a confusing concept. Okay, next is the secondary index. So primary and secondary you can easily identify by looking this graph. Primary index is, you know, on a primary key. Secondary index, which contains the some indexes in between main table and primary index, that is known as the secondary index. And to reduce the size of mapping, we can add the another level of indexing as a secondary index to reduce the size of mapping. So whenever we have a large amount of data, a large index, at that time we can do the primary index and secondary indexes. So huge range of column values is selected to keep primary index of smaller size. The range is then divided into a smaller ranges in secondary index for faster access. And after that, linear search can be used for the data retrieval. For example, if we have a 1 lakh indexes, so it's a very large value to store in a primary index. So what we can do, we can do 1 to 10k, 11 to 20k, 20 to 21 to 30k, like this in a primary index. Out of in that we can go for the secondary index and then main table. So this is the secondary index. And next, clustering index. Name suggests its meaning. Cluster. I don't know whether you have heard this word or not. Cluster means combining the same value into one group. That is known as the cluster. In a cloud computing, there is one word which is famous, known as the cluster. So the columns with the similar properties are grouped together to get the unique values in order to create the index that is known as the clustering index. For example, we have done group by clause in a practical. So group by will group all the records which is having the same column name. तो यहाँ पे हमने कैसे ग्रुप क्लस्टर किया है, सी, आई टी, ए आई, बिग डेटा. So from C we will get the record of C, from IT we will get the record of IT, AI from the AI data, and then from big data we will get this thing. So it will be easy to search. And this clustering index is based on non-primary key column, because the C, IT, AI, big data, it's not a primary key. So this is the clustering index. Clear? Now next is the hazing. So it's quite impossible to search the key or any value using any types of index whenever we have a large amount of database, very extra large amount of database we have, then it's impossible to search that key. At that time we can use the hazing. Hazing is a technique to directly search the location of desired data on the disk by applying some hash functions. So indexing आपको पता है कि for example 2 लाख पेजेस है हमारे पास, so सबकी इंडेक्सिंग आपको दो तो इंडेक्सिंग ही बुक में इंडेक्स ही आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी. तो उस केस में we can apply the hazing technique. Hazing, by applying some hash function, we can directly search that location of that data. So hash function uses the search keys as a parameter to generate the address of that data blocks. Generally, hash function use the primary key. Generally, hash function, because by using a primary key we can get the unique values and we can get the consistent database.
So whenever a hash function uses primary key to generate the addresses of the data blocks, at that time it will be more faster compared to the indexing. But this is the advantage of only in a used database. Otherwise indexing is perfect. सपोज आपकी 500 पेजेस की बुक है तो वो उसमें इंडेक्सिंग परफेक्ट रहेगा, और 1 लाख पेजेस की बुक है तो उसमें हेसिंग परफेक्ट रहेगा. अगेन आई एम सेइंग दैट it is based on situation, it is based on requirement. So in a hazing, data buckets are used. Yes, सर yes Bajrang. सर मतलब सर इंडेक्सिंग और हैशिंग का पर्पस एक ही है? सर्च करने का ही है ना, इजी वे में, फास्टर वे में सर्च करने का ही पर्पस है. वही सर. लेकिन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें कैसे करना है उसके ऊपर है. सपोज मुझे अभी चलो मैं एक आपको बेस्ट एग्जांपल दे दूं, ठीक है, कि बजरंग आई वांट टू नो, नॉट आई एम आस्किंग टू यू इन जनरल वे, इफ आई वांट टू नो द प्रोसीजर टू एनरोल द ओरेकल सर्टिफिकेशन, देन विच वन इज द फास्टर वे. मैं कैसे फास्ट आंसर ले पाऊंगा? मैं आपको पूछूंगा तो, कि फिर अमोद को पूछूंगा, या फिर आलोक को पूछूंगा? मुझे आपसे ही मिलेगा ना. सर्चिंग आप दोनों से आंसर एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो आता ही नहीं है तो मुझे कैसे फास्टर आंसर मिलेगा? ठीक है, फास्टर आंसर में भी कंपैरिजन होगा कि बजरंग, फ्यू स्टूडेंट्स आर वेरी एक्टिव इन लैब एंड लेक्चर्स, जैसे आप, हर्षित, रविंद्र, जयशंकर, लाइक दैट. ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे है कि अभी मैंने मनीष का बोला था तो वो आंसर ही नहीं दिया. ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे है कि मुझे आंसर ही नहीं देते. तो उसका मतलब क्या हुआ कि वी हैव ऑल स्टूडेंट्स. मैंने आपको तो पर्टिकुलर नहीं पूछा था, सबको पूछा था, लेकिन फास्टर वे में आंसर जिससे मिलेगा, मेरा पर्पस तो सही हो गया ना, कंप्लीट. यस मनीष. सर सर यस सर यस, सर आपने मुझसे कुछ पूछा क्या सर? हम सुनाई नहीं दी सर मेरे को कि सर सर अभी मतलब नहीं, मेरे अभी नहीं, स्टार्टिंग में पूछा था, स्टार्टिंग ओ में सर पूछा था. ओके सर, तो हम उस टाइम सर थे ही नहीं सर. ठीक नहीं, इसमें तो ज्वाइनिंग में आता है, और ये कॉमन. सर तो मनीष कुमार था सर, मनीष कुमार होगा, मनीष हमारा नहीं होगा सर. ठीक है, जो भी है तो छोड़ो, वो कोई बड़ी बात नहीं थी. आई एम गिविंग द रियल लाइफ एग्जांपल फॉर दिस एसिंग एंड इंडेक्सिंग, दैट्स इट. ओके, वी वर एट data buckets here. In a hazing there is one word, that is data buckets. So generally data buckets in hazing are used, are the memory location. Data buckets in hazing are the memory location where we can store the data. हमारा एक्चुअल डेटा वहां पे स्टोर होता है, दैट इज नोन एज द डेटा बकेट्स इन हैशिंग. देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैशिंग, स्टैटिक हैशिंग एंड डायनेमिक हैशिंग. स्टैटिक हैशिंग एंड डायनेमिक हैशिंग. In a static hashing, the size and the number of data buckets is fixed. Size and number of data buckets is fixed. So एक ही स्टेटमेंट में हमारा सब कुछ आ गया. The size and data buckets, size and number of buckets are fixed. Then how we can accommodate? अगर मैं ये बोल दूं कि मेरे लेक्चर में 20 स्टूडेंट्स ही होने चाहिए, तो मैंने साइज और नंबर ऑफ डेटा बता दिया, तो व्हाट अबाउट अदर्स? पहले 20 ज्वाइन हो जाएंगे, उसके बाद को मैं तो अभी किसी को अटेंडेंस नहीं दूंगा या फिर ज्वाइन नहीं करने दूंगा, तो दैट इज नॉट अ feasible. So we can understand it will create a lots of problem, and we cannot change that rule also. So the in a static hazing, static it means fixed, and dynamic it is variable. ये तो आपको समझ में आना ही चाहिए, static and dynamic, that thing word. So in a static, it do not changes with the size of the database. Address of the data buckets remain the same because static है तो वो same ही रहेगा. Initially, if the address of data bucket is generated using any hash function for any search key, then the address remains the same for all types of searches. एक बार जनरेट हो गया हैश फंक्शन से एड्रेस, तो डेटा बकेट का वो थ्रू आउट एंटायर प्रोसेस it will be same for the static hashing. So dynamic hashing, but obvious it will be opposite in terms of
size and number. So in this, size and number of the data buckets is not fixed, so we can change the size of database. Size fixed nahi hai, so it means we can increase and decrease the size of data buckets. So size of data buckets may shrink or grow depending on the database. Shrink or grow. Shrink means cut kar sakte hai, decrease, or grow it means increase. And address of the data buckets do not remain the same because dynamic hai, so every time it will be changed. So for every search, a new address of the data bucket is generated by the each hash functions. That is the difference between types of static hash and dynamic hash. Let's see one example. Suppose we have a set of strings like this, A B C D E F and G I. Suppose this one is our database. Database की एक कोई कॉलम है, उसमें हमने डेटा दिया है. अभी मैंने A B C D E F और G H I दिया है. That we would like to store in a database table. So objective, our main objective here is to find or update them quickly from a table. में update और करना है. So we are not concerned about ordering them or maintaining any order at all. We want to find or update that quickly. Now suppose we assign A is equals to 1 and B is equals to T, 2 or so on in alphabetical order, in alphabetical character. Then simply we can compute a number for each this string. जैसे यहाँ पे A is equals to 1 है, B is equals to 2 है और C is equals to 3 हुआ, तो ABC string का सम कितना हुआ? ABC, here it is example 1 plus 2 plus 3, it means 6. DEF का 4 plus 5 plus 6 15, GHI का 7 plus 8 plus 9 24, like this. Now suppose if we have a table of 5 columns to store this data with index 0 to 4, here it is drawn 5 column 1 2 3 4 5 and index start with the 0. जैसे आप एरे में इंडेक्स स्टार्ट विद 0 करते हैं सिमिलर में, ठीक है. और let's assume our hash function is sum mod 5. Hash function will be changed at every time. It's not so fixed. It depends on a requirement. So right now हमने example लिया sum mod 5 is the hash function sum mod 5. Let's do here it is the sum of ABC. It's 6. So 6 mod 5 it will be 1. So at index 1 we will get this ABC. So here it is the ABC. So we can quickly find this address. So ABC will be stored at index 1. Now let's see DEF. What is the sum of DEF? It's 15. 15 mod 5. It's a 0 mod, not answers. Sum mod 5, 15 mod 5, we will get the answer 0. It means at index 0 we will get the DEF. Here it is DEF, and the 24 we will get the 4 index. So this will enable to find the data item with better compared to the index. Yes, so this is the yes. We will see the B tree in the next lecture. So keep pen and paper with you. If you have a query, then you can ask. सर ये हैशिंग का ये एग्जांपल मेरे को समझ नहीं आया. Okay, simple. If I want to store the database at somewhere, for example आप सबको मुझे कहीं पे स्टोर करना है, जैसे एग्जाम होती है हमारे, तो मुझे सिटिंग अरेंजमेंट करना है, तो वो एक ही हुआ ना कि डेटाबेस के टेबल में मुझे डेटा स्टोर करना है. सिमिलर वे एग्जाम रूम में मुझे आपको स्टोर करना है. जैसे मुझे इजी वे में, फास्टर वे में कभी भी किसी स्टूडेंट्स मिल जाए तो मैं कैसे यूज स्टोर करता हूँ? बाय यूजिंग एनरोलमेंट नंबर वाइज. ठीक है, तो मैंने वहां पे एज फंक्शन सिंपली एनरोलमेंट नंबर सॉर्टेड फॉर्म में लिया है, लेकिन मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें क्या है, एज फंक्शन यूज किया है, इट विल बी डिफर. मैंने यूज किया सम mod 5. तो जो सम है हमारा एबीसी का सम क्या हुआ, उसको mod करे 5. अगर मैं सेम हैश फंक्शन आपके एनरोलमेंट नंबर पे यूज करूं कि सीट अकॉर्डिंग टू योर एनरोलमेंट नंबर or sit according to your last 2 digit of your enrollment number
divided by 2, then it we can say that that is the hash function. ठीक है, फिर जब मुझे सर्च करना है तो मैं डायरेक्टली वो हैश फंक्शन यूज करके डायरेक्टली दैट लोकेशन को एक्सेस कर सकता हूँ. सो हमें फास्टरली डायरेक्टली वो लोकेशन ही मिल जाएगा. लोकेशन पे तो कोई नहीं हो जाएगा. Rishabh Raj is saying use hashtag in Instagram. Is that same or different? At some manner, because hashtag that it partially indicates that category. You can say that partially, not fully, because in that hashtag in terms of Instagram, we will get so many values, but in a database we will get the unique value for that which is stored at particular that location. Hash फंक्शन अप्लाई करके हमें क्या मिलता है? इंडेक्स मिलती है ना. तो इंडेक्स तो आपकी एक ही होगी. ठीक है, एंड वो इंडेक्स पे जैसे 0 पे DEF था और 1 पे क्या था? ABC. तो 1 पे ABC होगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में आपको पता है कि 1NF में कब होता है? यूनिक वैल्यू. एक सेल में हमारी यूनिक वैल्यू होती है. ठीक है, ओके. Let's attendance.